Hello, everyone. Welcome. Namaste. Assalamu alaikum. Wherever you are in the world, welcome to the Transfer Show. Every Wednesday, we do this exciting transfer show. और मेरे साथ बेहतरीन gentlemen Prashant and Agrim as always to talk to discuss about exciting spicy transfer window. जैसे क्या होता है ट्रांसफर विंडो जो होता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटल बिटवीन क्लब्स टू साइन द बेस्ट प्लेयर्स ये नहीं कि क्लब्स और एजेंट्स के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है और ये जर्नलिस्ट के बीच में भी होता है हु इज ब्रेकिंग आउट द न्यूज फर्स्ट एक्सक्लूसिव कौन देता है तो ये दिस इज व्हाट मेक्स इट मोर इंटेंस एंड एक्साइटिंग द ट्रांसफर विंडो एंड exactly 2 weeks to go for the window to close and a lot of good players linked to top clubs so उसके बारे में आज बात करेंगे हम बट गाइस सबसे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना और अपने कमेंट्स अपने जो व्यूज है अपने ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में हमें बताना तो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की और जैसे कि प्रशांत अग्रिम आप लोगों ने देखा होगा नंबर ऑफ प्लेयर्स लिंक टू यूनाइटेड तो नाम लेने से पहले प्लेयर्स के मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट आर योर थॉट्स व्हाट इज गोइंग ऑन एट यूनाइटेड ट्रांसफर पैनिक रोनाल्डो का इंस्टाग्राम अपडेट ग्लेजर्स लुकिंग टू सेल द क्लब उस बीच में हमारे क्या नाम है ट्विटर के द वन हु बॉट क्या नाम है उसका टेस्ला वाला Elon Musk. Elon Musk. Elon Elon Musk, Musk. Elon Musk claimed that he is going to buy United. Then he said it was just a joke, and Yeah. so what's happening at United? So okay, एलोन मस्क का जो है वो सबसे पहले बोल देता हूँ दैट वाज जस्ट अ जोक उसमें एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं है शांत मतलब होल्ड योर हॉर्सेस और शांत हो जाओ टेस्ला को तो आदत ही है सॉरी एलोन मस्क को आदत ही है द टेस्ला ओनर हैज दिस हैबिट कि भाई बीच बीच में ऐसे कुछ भी जो भी ऑनलाइन ट्रेंड है उसको जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाना उससे Exactly. इमेजिन आई मीन इमेजिन द पावर ऑफ दैट गाय कि भाई ने सिर्फ ट्वीट कर दिया और इधर यूनाइटेड का शेयर बढ़ भी गया So went सिंपली viral. बिकॉज ऑफ अ जोक भाई ने मजाक कर किया सिर्फ मजाक किया और ये हो गया मतलब मजाक मजाक में ही कितना हो गया सोचो Hmm. तो वो सबसे पहली चीज है बट दैट इज जस्ट जोक वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट the other news about the sell off where the Glazers are said to be looking at selling a minority stake in the club. That is something which has been rumored even before. They have actually, I mean, I have personally read this particular news even in previous seasons. But I believe what happened on previous occasions is that right after this announcement would come around, the club would actually get back on track. So I would actually, on those terms, I would hope that the poor form continues so that they actually are forced to sell, sell off whatever they can. So this would be like the way I see it because the way Glazers are operating, right? They are operating in a very corporate type of a way. Like we are not fans for them; we are more like their employees. So even this particular minor sell-off may not necessarily be with the view to just do a minor sell-off because it would be like something like testing the waters. They want to see what type of interest they're getting. They want to gauge it. So they do not want to come across, obviously, that they are actually affected by the protests and the criticism that has hit them. So that is, I mean, that is most likely the case with regards to the sell-off. And if the interest is genuine, maybe that minority stake would increase into a major one or maybe into something else. That is the hope as the United fan. That is the only thing we can hope for. That is the only thing that can save us. Uh, Coming to the third point that you mentioned about the transfers, I don't even I cannot even remember the number of players that have been linked with United in the past 3 to 4 days ever since we lost to Brentford. So it's typical United. Something everyone is now used to. Same old PR machine in full swing.
all they are just basically trying to get whoever they can, right? Like okay, जिससे भी नाम लिंक हो सकता है करवा दो, जिसके भी तरफ ट्राई कर सकते हैं कर लो, कुछ भी मतलब प्लान वैन कुछ नहीं है, बस सीधा जाना है लाइक जस्ट so you know what the definition of insanity, right? कि भाई एक चीज नहीं हो रही है तो you would actually try to do the same thing differently, but that's not happening at United. Abhi, now John Morto is under pressure. He might get the sack. Out of everything, he is the one who would get sacked. Uh, so, okay, yeah, Instagram Ronaldo strikes again. Yes. Coming to Ronaldo. Okay. So I'm not exactly going to say that, oh yeah, uh, Ronaldo को defend करना चाहिए and this and that, but remember that यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम का हिस्ट्री अगर किसी को पता होगा तो लोगों को मालूम है कि हाँ भाई यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में चुगलीखोर है। अगर इफ आई डोंट परफॉर्म इन वन गेम रादर देन कि हाँ भाई चलो आई हैव प्लेड बैडली, ये क्या लिखा है भाई, फेक न्यू बस रोनाल्डो, ओके या, so rather than accepting the blame on themselves, the players, I mean, the easier thing for players to do is कि हाँ भाई प्रेस में ऐसा कुछ लीक कर दो कि रोनाल्डो ये कर रहा है वो कर रहा है। Before this it was Pogba. I mean we still don't know कि Pogba की सारी stories सच थी या नहीं। Obviously I'm not saying he was the same, but this is the same thing which happened to Pogba earlier कि भाई he is not doing this correctly, that correctly. Now it is this. So in my opinion, okay, this is something I'm putting out. There's no concrete information of this, but I think it is the English players, the British players, the guys like McTominay and the Rashfords, and maybe the Luke Shaws, who have been behind this because they have done this to Pogba, they have done this to people like Van Gaal, Ronaldo, Mourinho, everyone. So I think they are the common root here. According to me, I might be wrong. And yeah, again, you may have your say. I have spoken for 5 minutes now. So yeah. I don't know, man. भड़ास निकाल दी I'm इसने पूरी। really, hmm, Uh, sorry. I'm, That, I don't know. Mango, then I have I'm, एमशे कह रहा है ट्रैक बैक, नो अमीगो, इंटरव्यू देना है तो बोलो, फोन रोनाल्डो। तो आई विल स्पीक अबाउट रोनाल्डो, बट अगेन भाई हाँ कंटिन्यू, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ मैं वही देख रहा था, like in the last probably like 3-4 days after I think like we did the United Brentford game ना, उसके बाद मैं धड़ाधड़ न्यूज आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, like everyone is like linked to United, which is like Aubameyang and Casemiro I don't understand, have Real accepted the bill? Because Casemiro apparently now is stating that he wants to reconsider the option of going to United, if I'm not wrong. This is like अभी have you guys? seeing my uh, yeah, I mean, there are multiple stories linking to it. People say like, till a couple of hours back, it was 50 million is what Yes. was United ready to pay, and they're going to offer him good wages. Now, what I think Hmm. is that uh, there are two things to it. United are looking at it as कि Casemiro एक player है, 30 years का है, फ्रैंकी डियोंग का Hmm. रिप्लेसमेंट है। इफ यू ऑफर हिम गुड मनी तो यार कुछ हो सकता है, मे बी Yes. उसके एजेंट से बात किया रहेगा, बिकॉज इफ यू रीड अराउंड इट क्लियरली सेज कि एजेंट्स ऑफ वेरियस प्लेयर्स आर इन टॉक्स विद यूनाइटेड। तो यूनाइटेड आर इन द Hmm. मार्केट, बट टू विच प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स, वो हमें पता नहीं एग्जैक्टली। यस वी विल लिंक टू कैसेमीरो, Hmm. बट मुझे ये लगता है ये Yes. लिंक इज मोर और कैसेमीरो के साइड से, wherein he doesn't want to come to United, but he wants a better contract at Real Madrid. That's what my Hmm. understanding is, because Yeah. he's in a decent contract, but now since I think कुछ कम साल बाकी है and he would want to have a good extension, so maybe because of Yeah. that he might be doing it, because it makes no sense to me. मेरे को सेंस बनता नहीं है। कैसेमीरो चैंपियंस लीग विनर टीम के लिए खेल रहा है, why would he want to come to United, where the situation Hmm. is so bad, it's an absolute mess. Over and above that, United are not in the Champions League. Champions League का भी नहीं है. They are not going to, compete for the title. तो ये कोई सेंस बनता नहीं है, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ होने वाला है। 2-3 दिन Hmm. ड्रैग होगा ये, and the end of the day we'll come to know that
United couldn't afford Casemiro or United have pulled out or Casemiro is rejected. तो यही होने वाला है. It's not a realistic Okay, target. just But one let thing. me speak. Yeah. Hmm. Sorry, just to add to that particular thing. Uh, okay, Nadeem has a comment. So thanks, Nadeem. Uh, All the best, bro. so, Thanks, Nadeem. by the way, तुम लोगों को लगता है like Casemiro has already got player like his former teammates at Man United, right? Rafael Hmm. Varane, Ronaldo. वो लोग से वो बात करेगा वो लोग उसको बोलेंगे ऐसा कि हाँ कम ओवर बहुत मजा आ रहा है आई एम सो ग्लैड आई केम हियर How what do you old is think he would be hearing from them? how old is Casemiro, by the way? 30. Right? How old is 30, Casemiro? Yeah. 30, 30. right? 30, Yeah, so 30. I Yes, think yes. but I think मेरे को वही लग रहा है like probably Luka Modric and probably this guy Cruz is going to leave probably next or probably after that season and possibly उसके साथ I think 5 more seasons ये दे देगा क्या नाम है Casemiro to Real Madrid just for Hmm. the for him to like stay at Real again but I think he's going to Yeah. demand more wages from Perez. Mm. Yeah, that is probably what Exactly. Divya said, right? That it's Yeah, just a tool to get a yeah, better contract for himself at Madrid. yeah. That's what he is Hmm. doing. But Hmm. I don't really think it makes any kind of sense for a player like Casemiro to come here. I mean, he's in Madrid. He has Champions League winners around him, a league winning team, and he would leave that to come to a team which is right now at the bottom of the Premier League. Let's just Yeah. be honest. We are at the bottom of the Premier League. That is how teams would be viewing. Players would be viewing United right now. Why would anyone Hmm. come? Listen to True. this now. I just read something. Chelsea are interested in Casemiro and Todd Bowley is considering a bid for Brazilian. तो मुझे लगता है ये टॉड बॉली की तो कोई स्काउटिंग डिपार्टमेंट नहीं है जो दूसरे क्लब के प्लेयर लिंक्ड है. मुझे लगता है ये ट्विटर नोटिफिकेशन रख देता है फेब्रिशियो रोमानो Hmm. डेविड ऑनस्टीन का. तो प्लेयर्स लिंक होते हैं तो चलो चेल्सी भी बाय करेगी. तो Hmm. आई डोंट थिंक But पैसा है ना कैसेमिरो विल. Chelsea. हाँ, Yeah. Chelsea का पैसा है they can do anything they want. But ठीक है पैसा है बट ये मुझे लगता नहीं है रिलायबल है इतना. कैसेमिरो मुझे तो यही लगता है कि ही वांट्स अ बेटर सैलरी और रियल उसको जाने देगा नहीं. I know that they bought Chomini. Chomini is a fantastic Hmm. youngster, but वो Kamavinga उसका भी है. बैकअप करेक्ट Yeah. कामाविंगा भी है बट आई थिंक दे विल गिव हिम 1 or 2 years टू सेटल. जब तक चोमिनी Yep. सेटल होता है कामाविंगा सेटल होता है तब तक कैसेमिरो विल बी 30 to 33 and maybe then they will let him go. But right now I don't see why Ancelotti would नहीं want to disturb his एक तो midfield. एक्सपीरियंस प्लेयर तो है रियल बिकॉज यू नो व्हाई Hmm. बिकॉज दे हैव वन like 5 Champions League in the last 9 years, na? Hmm. 8 years if I'm not wrong. So I think they need one solid what do you call experienced senior player in that squad. I think मेरे को नहीं लगता है like Cruz or Modric will stay for long at Real, but they need like one solid player like Casemiro because वो सबसे ज्यादा वही रहा है ना उसके बाद उनके Exactly. उनका Yes. मेन प्लेयर. बट बहुत अगेन बहुत ही like मतलब सुलझावा yes प्लेयर एकदम. बहुत ही yes काम कंपोज्ड है. व्हेन ही प्रेस्ड अराउंड बहुत ही अच्छे से खेलता है एकदम. बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर एंड आई डोंट थिंक रियल विल लेट हिम लीव एट दिस पॉइंट इन टाइम. मे बी यस Kamavinga and Chomini are the ones for the future, mm, but they need yes time to settle, and they will give him 1 or 2, both of these players 1 or 2 years. उसके बाद maybe they let Casemiro go. MCA says could Messi be gives interview, रोनाल्डो को भी देना है. अरे भाई ये फिर भी अभी भी एमचे तो मतलब रोनाल्डो तो पीछे ही पड़ गया है पीछे पड़ गया भाई नाद हो गया. हाँ okay. टॉड बॉली स्ट्रेटजी आज का. अच्छा आज का खबर लाना है. अखबार अच्छा लाना है. अखबार Todd Bowley, I लाना mean, अखबार they actually don't have a football director. Peter Cech Yes. and the other woman who was handling the transfer, they have left the club. मणिनगर So they are looking to, yes, yes, exactly. So they are looking to get a football director, but I think that will take time. So right now they are just listening to Thomas Tuchel and a couple of advisories who are advising about the players, and they are signing players left, right, and center. I think I'm going to talk about Chelsea transfer later. But yes, coming back to United, another player linked to United is Chelsea's Christian Pulisic, who Hmm. United are looking to take on a loan. Now, I think Pulisic will be open to move because World Cup आ रहा है. He doesn't get a guaranteed starter. He's not a guaranteed starter in Thomas Tuchel's Chelsea lineup. So maybe to play more games to get more minutes, he may join United. But I don't think he will
Chelsea will want to let him leave on loan. It will either be a loan with a obligation to buy or you buy him straight outright. So that's what the situation. Yeah. Fantastic player. I mean, player तो बहुत ही बढ़िया है. सिर्फ थोड़ी injury issues है. Otherwise, Yeah. he's produced some brilliant moments. Especially जब Hmm. आपको आप दोनों को याद होगा जब लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ था प्रीमियर लीग. That point of he Yes. was unplayable. इतना फैंटास्टिक खेल रहा था Yeah. तो है बहुत ही Yes. बढ़िया प्लेयर है. टॉट बॉली स्ट्रेटजी अच्छा. आज ट्विटर पे कौन ट्रेंड कर रहा है? कैप्टन अमेरिका एंड फादर टेरेसा इन सेम टीम. हाँ. तो बाय द वे, ये बोला. मतलब पुलिसिच, हाँ, पुलिसिच का जो है, आ, हम्म. उसने चेल्सी पे ही hasn't exactly set the world alight. तो आई थिंक बिकॉज अपने को विंगर का जरूरत है, वी कैन डू विथ हिम, बट हाँ, it would only be like a loan thing. I don't think it can go anything beyond that. Uh, yeah. हम्म. So before I move on to other clubs, quickly want to talk about United's forward lineup, and the player that are linked to it, Jao Felix, फिर मैथियस क्यूना, और कौन लिंक थे मतलब कितने सारे Moises जो Caicedo. प्लेयर. Most Caicedo is a midfielder. I think हाँ. United wanted to sign him for 5 million a year and a half back. And he scored a goal Yeah. against United. बहुत ही fantastic player है, young defensive midfielder है. Brighton just let Bissouma go to Tottenham. I don't think they would want to do another midfielder. And at this stage on transfer window, I don't think they are ready to. So unless United pay crazy money, it is not going to be possible. And yes, absolutely. तो ये मिडफील्डर का सागा तो कंटिन्यू होने वाला है. एड्रियन राबियो ने मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी. एड्रियन राबियो का ये ठंडा हो गया है. ही इज नॉट गोइंग टू जॉइन यूनाइटेड No. बिकॉज he was he wanted to be the highest paid player. The salary demands he were outrageous. Plus he wanted हाँ. bonus. And if you remember, यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स का 25% सैलरी कट हुआ ये सीजन बिकॉज दे couldn't qualify for the चैंपियंस लीग. हर एक प्लेयर के क्लॉज में है इफ दे डोंट क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग इंक्लूडिंग रोनाल्डो उनका 25% वेजेस कट होगा. तो इफ दे कैनॉट एंड अप गिविंग अ प्लेयर लाइक एड्रियन राबियो a huge contract. So I think that's off. But हाँ midfielder search continues. Forward का भी देखना है. And I just heard जाओ फिलिक्स के लिए यूनाइटेड ने 130 मिलियन बिड किया था. 130 मिलियन बिड is rejected. Now I'm not sure how reliable the news is, but 130 million is crazy money. That is crazy money. And like the Yeah. Real, it's a Madrid source. Take it. So Yeah, Abhishek is saying the अभिषेक से same. जाओ फिलिक्स जमाने से सुन रहे हैं. जमाने आए आ रहे जा रहे बट प्लेयर नहीं. हाँ. वी नीड एलेक्स हंटर. अरे वाह क्या प्लेयर था एलेक्स अरे हंटर. फीफा. फीफा वही. 25% कट नाल्डो. अरे हर चीज में ये तो नाल्डो को ऐड कर देगा. भाई शादी कर ले इससे. तो गाइस तो गाइस यूनाइटेड की बात तो चलती रहेगी. एंड एग्जैक्टली लाइक आई सेड 2 हफ्ते बाकी है. यूनाइटेड हैव टू साइन 2 midfielders, 1 forward, and maybe if the time and money is left, they may sign a wing back. But again, that looks very difficult. The only wing back right now is Thomas Munier और बारसा का सर्जिनो डेस्ट. तो ये दो ही लिंक Yes. है. एमशे से एरिक बमहैग. अरे बेचारे को उसकी तो कोई गलती भी नहीं है यार. बेचारा कहाँ बोलता रहेगा मैंने मुझे लुई वान हाल की बात सुननी नहीं चाहिए. कहाँ आके फंस गया. हाँ. When is the last day of window? 31st August. 31st August. 31st August. 31st August. पॉसिबली आई थिंक 1 सितंबर भी एक डेडलाइन दे देते हैं ना. 1 सितंबर भी कभी कभी डेडलाइन हो जाता है. Now I think this time it is 31st August. 31st है. हम्म. तो यार मूव करते हैं मैन यूनाइटेड से अग्रिम भाई की क्लब को बार्सिलोना. एंड आई couldn't there is a lot to talk about Barcelona, but something I wanted to talk about is Gerard Romero's quote, Calma Bernardo Silva. Has been linked to Barcelona since the beginning of transfer window. So we knew Yes. Barca liked him, Xavi loves him, and they want that kind of the player. But मुझे अग्रिम भाई एक बात कुछ नहीं. आपने मैच Yeah. देखा होगा राय वॉल्कानो के सामने. वीकेंड पे. I also watched that game. If you look at that midfield, Gavi good, Pedri good, Kessie good.
Busquets was also good, but Hmm. Frankie De Jong, when he came on a substitute, he was something else. I loved him the Hmm. way he played, and I'm not sure why do Barcelona want to let go of such a fantastic player. मुझे पता है यूनाइटेड नहीं आने वाला है वो, डेफिनेटली पता है if he will go to Chelsea, but क्या midfielder यार मैं I saw him for Absolutely. मतलब क्या मतलब he can carry the ball, he can dictate the terms, or he can Hmm. pass through, break the line. So ऐसा midfielder, I know Bernardo is a fantastic player, but yeah, what I saw of Frankie De Jong on that weekend, brilliant player. Yes, 100%. What I want to say is like, I think possibly after that 4-0 defeat against Brentford, right? Hmm. Hmm. I think Correct. he came around like 68th minute, if I'm not wrong, against Rayo Vallecano, Frankie de Jong. Hmm. He gave a Hmm. performance of his, like lifetime, like just to avoid this transfer. Nothing against like United fans. No, I mean, Hmm. every United fan wants him uh, at, at, at their club. But my thing is like, he still wants to convince the Barcelona board, that I am very crucial for this team, and I think I deserve to have this spot before you throw me out, which is actually Yeah. ridiculous. Yeah. Because आपने जो game देखा, the way he went through, those two three players, nobody can do that. Nobody could do that match. Very convincing performance. But I'm surprised if this happens. It will be very shameful. But again, it will be an I mean, advantage to United as well. yeah, I don't think he will come to United. I would love I mean, Frankie see, De Jong to nobody, be at United, nobody, but nobody knows, no? Nobody knows what's going to happen, right? You have to stay optimistic. mm, It can happen. Who expected Messi to leave, no? Nobody expected Messi to yeah, leave. correct. Yeah, yeah. Yeah, I mean, I would be the most happiest person. After what I saw in that game, I got more and more confident. I knew Frankie De Jong how he plays. He loves to, spray passes and dictate the terms, or he can carry the ball. There's so many things they can Absolutely. do. So many positions he can play in the midfield. So ideal midfielder for any club, and an Yes. impact player. If he comes to United, तो भाई midfield का scenario change जाएगा. Imagine someone like Frankie De Jong and Casemiro, or Frankie De Hmm. Jong and Moses Caicedo in the center of the park. Hmm. The entire situation will change, and that's where United are actually struggling. The midfielders are very poor, piss poor, absolutely. मतलब relegation battling team का भी midfield United से अच्छा है. So it's that bad. So he will definitely be a huge improvement. Yeah, but his answer, So is a very good answer to your midfield problems. Any day. absolutely. I've been saying that since a very He's long quite time. press resistant. He's very press resistant. You cannot take the And ball easily सबसे from उसका him. correct, exactly. He knows he's very quick, he's very smart. He knows the players Yes. around him. He will, Yes. सबसे बेस्ट उसका क्वालिटी है, प्रेस रेजिस्टेंट है वो. एमशे बोल रहा Yes. है मेसी भी लाइक लापोर्ता लोडू पैसा कहाँ से ला रहा है. So yeah, Frankie De Jong, so yes, we spoke about him, but Bernardo Silva, a different type of midfielder, more of an attack-minded player. But if you Mhm. look at what is done at Man City, off the ball, his pressing is fantastic. His work rate is Yes. brilliant. He's tenacious, though he's not a CM or a CDM. He's more of a central attack midfielder. But the work rate he offers off the ball is fantastic. Yes. So, Mhm. of course, it would be a really good signing. But again, to spend 80 to 90 million on Bernardo Silva, I don't think it makes any sense when you Yes. already have Frankie De Jong. Doesn't make any Yep. sense. And बोल रहे हैं कि Man City won't let him go and Barca will, कुछ बोल रहे Spanish media बोल रहे they will sign him. But I don't think Man City will, उसको रोक देगी या ट्रांसफर ब्लॉक करेगी. पेप का सीधा ये है फंडा है भाई, तुम्हें नहीं खेलना सिटी के लिए नो प्रॉब्लम, आई रिस्पेक्ट दैट, आई लेट यू गो. Mhm. बट प्रॉब्लम ये है कि मैन सिटी बोर्ड विल डिमांड एटलीस्ट 80 to 90 मिलियन, बिकॉज उनका टॉप प्लेयर अलॉन्ग विद केविन डेब्रॉयने. तो 80 to But 90 don't be मिलियन. surprised. But just don't be surprised. Like if they go for a swap deal. But I don't think De Jong, Frankie De Jong उनका प्लेयर है ही नहीं. Bernardo They never Silva. wanted Frankie De Jong. हाँ, No, no, Barca it's would and not love like that. that. Hmm. No, no. If they want, like just like okay, take it. Possibly like 10 or 15 million pound.
पाउंड्स और यूरो जितना भी रहेगा, बट बाकी वही उसका कवरेज तो कर रहा है ना दोनों प्लेयर्स एक दूसरे का। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट पर आई एम ट्राइंग टू से। नहीं, तू तू बोल रहा है, Yeah, तेरी बात एकदम सेंस बनती है, बट एक ही है कि आई डोंट थिंक फ्रैंकी डियोंग इज अ पेप गार्डियोला प्लेयर, एंड मुझे लगता No, he नहीं can be. मैन सिटी You नेवर know शोड why एनी why इंटरेस्ट. why why can he why he no, can be a I think good player. he can fit into Defensively Pep's system, defensively but defensively then, दो जन और अच्छा मिल जाएगा uh, उसको no, विद but रॉड्री एंड अपना। yeah, he is. I won't say that he is not a Pep player, but then again, Frankie De Jong and Bernardo Silva are not exactly alike, as Divya correctly mentioned. Moreover, Yeah. Exactly. uh, Hmm. see, for someone like De Jong, the concern is even for those for when he was in United is that उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फिजिकलिटी को यूज टू होने में. ही इज नॉट दैट फिजिकल. ओके. Hmm. अभी ये Guardiola के सिस्टम में तो as it is there are other players who are anyway better than him. So I don't think Hmm. he would even need someone like De Jong. So I don't think a swap is something that is likely on the cards. But yeah, if he does come to Barcelona, it still doesn't make sense, as Divya mentioned. Like, why would he Yeah. even go to Barcelona? Like, Yeah. when Barca have so many options, right? Like, Yeah, we but he's mentioned not giving four any sort of window. defensive what do you call output na Bernardo Silva. Yeah, yeah, exactly. But they have those, but they have the players who can do that. That's what Xavi Yeah, believes. Kessie can do that. Busquets, of course, is Yes. there for another year. I think Xavi yeah. and Pedri are also decent. They can do a decent job. Pedri So is good, but that's I'm what not Xavi like believes. somehow convinced like Gavi. Gavi loses the ball very easily. Yeah, yeah. But anyway, छोटा है, it's just immature है थोड़ा. But हाँ. yes, it's gonna take some time anyway. तो कमेंट्स पढ़ लेता हूँ मैं फटाफट. MC says sure CR7 won't fake illness against Liverpool. आई डोंट थिंक बर्नार्डो कमिंग. एमसी भाई बोल रहे हैं बर्नार्डो नहीं आएगा. Me too. बट यार ये विंडो बहुत ही कुछ भी हो Yeah, सकता है. लास्ट 15 दिन में yeah, वॉच yeah. आउट. एनी डील कैन हैपन. यू बारसा नो तो वैसे भी कुछ भी कर सकते हैं. कहाँ से पैसे लाके डाल रहा है. Who knows? एमसी से इलॉन मस्क बाइंग यूनाइटेड. नहीं भाई, उसने बोल दिया है कि मजाक करा था वो नहीं मजाक था. खरीदेगा. सो डजंट मेक एनी Banter था सेंस. भाई. पीपल हाइप इट एंड वो जरूरत नहीं था, फिर भी वायरल हो गया. फुकट का Exactly. की कोई जरूरत नहीं थी. MC says हाँ, McTominay मैकटोमिन. after winning 2026 Ballon d'Or after Elon Musk gives him 100 IQ boost in a neuro chip. वैसे वो बूस्ट के बाद भी नहीं खेल पाएगा. जीत पाएगा. इवन आफ्टर द बूस्ट. भाई तो एनएफटी भी वो एनएफटी नहीं भी रहेगा. करेगा। क्या बोल रहा है गिरी? तो भी विल सी। तो मैं बोल रहा हूँ उसका उसका क्रिप्टो करेंसी भी बनाएगा ना मैकटोमने का, तो भी कुछ नहीं कर पाएगा वो। वो भी कुछ नहीं कर पाएगा. ऐसे. But तो anyway, गाइस, बार्सिलोना से ही बात करते हैं. मूविंग ऑन फ्रॉम Bernardo Silva and Frankie De Jong, the other outgoing Sergina Dest, and I think he was not even the squad में भी नहीं था राव अल्कानो के सामने. yes, फिर yes. मेम्फिस डिपा आई थिंक इज ऑलमोस्ट डन. ही विल जॉइन यूवेंटस. कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट से. एंड आई थिंक ही विल बी अ यूवेंटस प्लेयर सून. इसके अलावा अग्रीम भाई क्या लगता है आपको, और कोई जाएगा? वो अपना डेनिश प्लेयर, क्या ओबामयांग नाम तो है आता उसका, है। डेनिश या स्वीडिश? मार्टिन ब्रेथवाइट. ब्राथवेट. मार्टिन रेड मार्टिन उसको तो ब्रेथवेट. निकाल देंगे यार। he has to leave anyway because उसने बोला ना he wants some minutes to before he gets his playing time for बट World सैलरी Cup. पे में उसको सैलरी भी चाहिए अपनी ना, डिफॉल्ट वेजेस भी चाहिए उसको. तो बैठ एंड जाए, आई हैव बैठ रेड इन द जाए। रिपोर्ट दैट हाँ उसको प्रॉब्लम नहीं है ना बैठने को. ही इज ओके टू से. मतलब वो एक साल हाँ से वैसे ही वही कर रहा है. भाई का तो बहुत बड़ा बिजनेस भी है अपेरेंटली. उसको तो फुटबॉल या खेलने का रियल जरूरत भी एस्टेट नहीं. का 250 मिलियन एग्जैक्टली. का। हाँ, एग्जैक्टली। वही. एक्चुअली में उसको खेलने का जरूरत नहीं थी. दैट्स व्हाई लाइक इवन आई रेड अ रिपोर्ट के भाई ही इज एक्चुअली digging his heels in. दैट्स व्हाट द रिपोर्ट stated specifically कि भाई वो भी टिके रहना चाहता है. ही इज आल्सो गोइंग टू स्टैंड हिज ग्राउंड. ही इज नॉट गोइंग टू. ही डजंट हैव एनी रीजन टू गो अवे. बारसा का बारसा के पेरोल पे है. बार्सिलोना में रहने मिल रहा है. एंड पैसा तो है ही, आ ही रहा है सब जगह से. व्हाई नॉट? So that will एब्सोल्युटली। be a tricky situation. I think Deon से ज्यादा maybe Barca should have focused on someone like Rafael first, या looking at how strong a case he is making. At least Deon is contributing to the team.
That's why is not even in the first team. एमसीए का कमेंट After पढ़ो. two, एमसी से बारसा हाँ, तो उसका Barca साइड is the बिजनेस side with है. हाँ, वही छोटा But मोटा yes, I think लॉसेस देगा तो चलेगा. हाँ वही नॉट अ बिग डील. I think Sergino Dest is more likely to leave Barcelona, Yeah. and from what I'm hearing, Foyt is the right back that Barcelona are linked to. अरे भाई पैसे कहाँ से ला रहे हैं यार ये? बर्नार्डो सिल्वा साइन करना है, जूलियन फॉयट साइन करना है, एंड जूलियन फॉयट से आई थिंक विलारियल कुछ 40 मिलियन मांग रहा है. 40 तो भाई पता 42 नहीं million. कहाँ से लाएंगे ये Release clause 42 उसका. मिलियन. 42 million is the release clause. पार्ट टाइम हसल विद एमसी. So, well, like I said, Sergina Dest is going to leave. Arjun. He wants minutes. World Yeah. World, World Cup है उनका आगे. तो But where is he linked by the way? ऑप्शन I don't know. यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड. अच्छा. अच्छा, Arjun, Dest is also. एरिक टेना का प्लेयर है वो. हाँ, yes. एक्स आयक्स हाँ प्लेयर है. right. प्लेयर फॉर एरिक टेना. हाँ Hmm. अच्छा इसलिए तो वो एक चांस है. बोल रहे हैं कि बार्सिलोना का लिस्ट में आयरन मैन बिसाका और डिएगो डलो भी है. मैं बोला अगर ये बारसा अगर इन प्लेयर को स्काउट करे तो बारसा का उल्टे Hmm. प्लेयर शुरू हो रहे हैं. डिएगो डालो ओके, डिसेंट राइट बैक. आयरन मैन बिसाका नॉट श्योर. I don't ऑफेंसिवली think वो बहुत पुअर है. बहुत पुअर है, बहुत पुअर है. इंग्लिश प्लेयर है ना, आई थिंक बिट नहीं मारेगा. हम्म. हम्म. और डिफेंसिवली भी उसका ही इज ओनली गुड एट स्लाइड टैकलिंग. उसका if you look या at the position during corners and those crosses in the box, उसका पोजीशन या बहुत वीक है. नॉट गुड इन द तो एयर. तो उसका वीकनेसेस बहुत है. बहुत फ्रेजाइल भी है. तो पता नहीं ये लिंक्स कहाँ से आ रहे हैं. बट लेट्स सी इफ बार्सिलोना साइन मोर प्लेयर्स. Bernardo Silva or Julian Foyt for now are the two linked. MC says Eric जुलियन Van पॉइंट Haag बट relying on एक्चुअली nostalgia. हाँ क्या बोल रहा मैं था? बोल रहा था that is बेसिकली. हाँ, बोल प्रशांत, यू गॉन. मैं आई वाज रिप्लाइंग टू एमसी's कमेंट कि भाई हाँ नॉस्टैल्जिया तो वैसे भी यूनाइटेड का ट्रेडमार्क ही बन गया ever since the Nostalgia ही days है. of only nostalgia ही है and anyway United doesn't even have a director of football so this is the same We thing won मतलब 20 Premier League titles. We won हाँ Champions League. We are the greatest team. अभी कुछ नहीं. हाँ खुश. अभी हम we are the तो weakest team. कोई भी आके ओल्ड हाँ ट्रैफर्ड में हमको हरा के जाता है. ब्राइटन हराता है. हाँ कोई भी अभी लिवरपूल हराएगा हमको. अब तो कोई भी हमें तो कोई हाँ इज्जत ही नहीं रही. वैसा हाँ सिचुएशन है. इट शुड बी हैपनिंग दिस वन ना, नॉस्टैल्जिया में लाइक जी रहे. यू गाइस नॉस्टैल्जिया में. यू गाइस हैव हाँ टू वही वेट वो फॉर बोलते हैं ना, 2026 वो टीम. भी दिन थे जब हम वो भी दे जीतते थे. जब वैन वही पर्सी वॉली मतलब मारता था. जब रूनी हाँ ओवरहेड एग्जैक्ट बाइसाइकिल किक मारता ठीक था. बात जब हाँ सोलशायर फाइनल मिनट में विनर मारता था. वो भी दिन थे. हाँ वैसा यूनाइटेड का हालत हो गया ओके अभी. है और कैसा है कि they might actually have a plan all they do is हाँ exactly that is आज exactly what रैंडमाइज they प्लेयर are आउट. doing. Yeah देख they अभी don't क्या हो have रहा a है. plan हाँ शॉर्ट में बता दो यूनाइटेड का प्लान क्या है. मतलब ठीक है. When the transfer window began, Eric Ten Hag wanted Frankie De Jong, Darwin Núñez, या Dumfries as a right back, another midfielder, maybe Adrian Rabiot or someone else, और एक फॉरवर्ड चाहिए था उनको. फॉरवर्ड डार्विन न्यूनेस था और एंटनी. यस एंटनी, दीज आर द प्लेयर्स. Anthony Ajax refused because United went in very late. By the time Ajax had done the business, Darwin Núñez choose Liverpool. Frankie De Jong, we all know what's going on. Dumfries is 40 million, तो प्राइस यूनाइटेड प्राइस आउट हो गए. तो अभी या यूनाइटेड क्या कर रहा है? दे आर गोइंग इनटू द मार्केट टॉकिंग टू एजेंट्स. एजेंट से बात कर रहा है कौन से प्लेयर अवेलेबल है. वांट टू लीव द क्लब एंड देन दे आर गोइंग बैक टू एरिक टेन हाग. डू यू वांट हिम, डू यू वांट हिम. इसका स्टैट्स ऐसे है. ही सो गुड, यहाँ पे गुड है, यहाँ पे गुड है. एरिक टेन हाग तो फिलहाल वो डार्ट किसे ना डार्ट तो थ्रो कर रहे हैं. डार्ट जहां लगता है ठीक है, लग गया. प्लेयर साइन हो गया, हो गया. जो होता है देखा जाएगा. प्लेयर साइन करना है, साइन करना है. तो वैसे कोई प्लान तो कुछ नहीं है. बस आंख बंद करके मैनेजर ने बोला था साइन नहीं कर पाए प्लेयर. अभी ठीक है, दूसरे जो बाकी है उन एजेंट्स को पूछ लेंगे कौन से प्लेयर अवेलेबल है और हम साइन कर लेंगे. यही हो रहा है यूनाइटेड में. कोई प्लान नहीं है. सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी. जॉन म्यूट. मतलब गुड वन एमशे, गुड वन. तो गाइस मूविंग ऑन, चेल्सी के बारे में बात करते हैं. और चेल्सी इज वन टीम. यू नो जब विंडो बिगिन हुआ तो उन उनका बहुत सिचुएशन थोड़ा अच्छा नहीं था. नॉट बिकॉज दे आर फाइनेंशियली नॉट गुड. फाइनेंशियली तो अच्छे थे ही वो. बट बार्सिलोना उनके डील्स हाईजैक कर रहे थे. प्लेयर रिफ्यूजिंग टू साइन.
You know, I we thought that Koulibaly और स्टर्लिंग के अलावा कोई साइन नहीं कर पाएंगे, एंड हियर दे आर. कुकरेया साइन कर लिया, एंथनी गॉर्डन के को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं. वेस्ली फोफाना 80 मिलियन बिड रिजेक्ट किया लेस्टर ने, बट फोफाना इज नाउ इरिटेटेड, ही वांट्स टू जॉइन चेल्सी. हाँ, और आई थिंक द नेक्स्ट बिड जो होगा 85 मिलियन या जो भी होगा, आई थिंक दैट विल बी एक्सेप्टेड एंड फोफाना विल इवेंचुअली जॉइन चेल्सी. तो Yep. एम्बिशन है उनका, उनके पास भी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल नहीं था, बट दे फिगर्ड देयर वे आउट. दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन यूनाइटेड एंड अदर क्लब. चेल्सी आर एम्बिशियस. बोल प्रशांत, क्या बोलना चाहते हैं? Yeah. So, तू ऐसा so हाथ ऊपर करता imagine, है ना, imagine. तो ऐसा हाथ ऊपर करता है ना, हाँ, मुझे वो बीजेपी का वो लीडर है ना, क्या नाम है उसका, डॉक्टर, वो क्या है, संबित उड़ीसा पात्रा, वाला, क्या नाम है संबित उसकी पात्रा. है, संबित पात्रा, समित पात्रा की याद आती है मुझे. जो संबित समित पात्रा. पात्रा की तरह ऐसा वो न्यूज चैनल ऐसा हाथ ऊपर बैठ करता है, जा, तो ऐसा बैठ जा. बैठ जा सूर्या, बैठ जा, बैठ जा सूर्या, बोल गुस्सा बोल मत बोल कर, बैठ जा. बोल बोल बोल, क्या बोल रहा था अच्छा. तू? हाँ, तो मैं बोलने जा रहा था कि if you compare Chelsea and United, right? Chelsea got the club sold, पूरा वो लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब कुछ पूरा रिप्लेस हो गया. लाइक उखाड़ के फेंक दिया पुराना वाला जो स्ट्रक्चर था, सब नया आया. एंड स्टिल दे साइन, उसने उन लोगों ने इतने सारे प्लेयर साइन कर भी लिए, राइट? मतलब एक दो महीने पहले ऐसी एक टाइम पे बात थी कि शायद चेल्सी कोई साइन नहीं कर पाएगा किसी से, हो गया सब खत्म. दे अभी दे एक्चुअली ओवरटुक यूनाइटेड, दे हैव साइन मोर प्लेयर्स देन यूनाइटेड. और यूनाइटेड का वही हिसाब पिटा जो बोर्ड है, जो भी उनका सिस्टम है, वो लोग किसी को साइन नहीं कर पाए. इमेजिन. तो ये बेसिकली मतलब वही जो बहुत लोग यही बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स के, यूनाइटेड का जो सिस्टम है पूरा स्काउटिंग वगैरह का, वो अभी भी 2008 का है. और ये लोग 2022 के सिस्टम से सब बाकी सब चल रहा है. हाँ, वो लोग बस तो वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये सब पढ़ा है ना. ये लिवरपूल और ये मैन सिटी का स्काउटिंग ही देख लेना, दे आर लाइक सो एडवांस. हाँ, एग्जैक्टली, इट इज वेरी एडवांस. वही ना, तो वहां पे पैसा डालना. लेजर्स का तो छोड़ ही दे, अभी इनफ इज सेड, बट दैट इज वेयर दे आर लैकिंग, दैट इज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर दे आर Yeah, I लैकिंग. don't understand one thing. Like, I just want to ask you guys one question. Like, if these clubs are making important decisions when scouting a player. Like, हाँ ठीक है, I have to invest like probably 60 million on this player, and this guy is going to give me this amount of possibly goals and assists. So, is this like worth taking that amount of risk? I नो. don't understand. Like, United ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है with this thing. There is no assessment in United, there is no analysis. Right now, Hmm. this transfer window, we are going to do what manager tells us to do. Ajax पे साइन हाँ, करेंगे, नहीं हो गए तो जो अवेलेबल है देखेंगे. विल गो टू द मैनेजर, आस्क हिम वेदर आपको प्लेयर पसंद है. स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी हाँ, यूनाइटेड की, कोई असेसमेंट कुछ वही. नहीं और एंड है बस. इमेजिन, हम लोग ने लाइक अपेरेंटली प्लेयर्स लाइक वैन बिसाका एंड बायू ऑफ पुट फॉर सेल, नो वन इज विलिंग टू टेक देम, इसलिए अब जाके वी हैव पुट जेम्स गार्नर फॉर सेल, जो एक्चुअली अच्छा प्लेयर है. ही कुड बी मोल्डेड इनटू समथिंग सो गुड. उसको बेच रहा है, मतलब करेक्ट. हद है ना. तो गाइस गाइस ओके. एक मिनट में कमेंट्स पढ़ लूं, या फटाफट कमेंट्स पढ़ लूं. MC says Aubameyang to Chelsea. Yes, yes. Another या transfer that Chelsea are looking to close. Future also nostalgia FC. संबित पात्रा को बोलो ओरिजिनल आईडी से आए. Twitter, Casemiro is out for 4 weeks after fracturing his ribs, laughing at United transfer rumor. अरे रे रे, ऐसा हुआ तो म्यूटा क्या, सैक कम तो से कम. हुआ तो क्या, कम से कम उसका यूनाइटेड में इंटर्नशिप तो खत्म हुआ. हाँ भाई, इंटर्नशिप ही था ब्रो. तो सब क्लब्स यूनाइटेड को फ्यू क्यों बोल रहे हैं, देखना. आई मीन, कमिंग बैक टू द एमसी का पॉइंट, दिस tweet I wanted to read from Romano. Atletico Madrid have no intention to sell João Felix this summer and also won't accept 50 million for Matheus Cunha. Clear message sent to United. John Muto had direct contacts with Atletico and the answer was negative. मतलब if somebody can be, मतलब इससे बुरा अपने जॉब पे कौन हो सकता है. कोई एग्जांपल है, जॉन म्यूटर से बुरा तो मतलब भाई एट दिस पॉइंट इन मोमेंट ऑन हिज जॉब कोई नहीं हो सकता, बिकॉज बेसिकली वो और डायरेक्ट फ्रैक्चर, they are not experienced, they are learning on the job. Yep. Because United didn't want to hire someone from outside. क्या हो गया, रैगनिक को हायर किया, रैगनिक ने एक्सपोज कर दिया उनको, एंड दैट्स व्हाट दे वर Yep. अफ्रेड ऑफ. तो भाई अंदर से प्रमोट करो, एक को अंदर से प्रमोट करते हैं और एक
नॉस्टैल्जिया से एक प्लेयर को लेके आते हैं, उसको बना देते हैं। नो एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है एक्सपीरियंस की यार, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो यही यही सिचुएशन है की। और मैटियस क्यूनर आई थिंक 70 मिलियन कुछ रिलीज क्लॉज है। 70 मिलियन पे करना होता ना तो एंटनी के लिए पे कर देते। आई डोंट Yep. थिंक मैटियस क्यूनर को भी साइन कर पाएंगे यूनाइटेड। तो कमिंग बैक टू यूनाइटेड चेल्सी। क्या, सॉरी आई हाँ जस्ट बोल ऐड प्रशांत, दैट क्या बोला? यूनाइटेड का, लाइक यूनाइटेड का ट्रांसफर मार्केट में भी कैसा हालत है पता है? लाइक कुछ साल पहले तुम लोग को याद होगा, ये लुइस सुआरेज व्हेन ही वाज एट लिवरपूल राइट, उसका 40 मिलियन का रिलीज क्लॉज था। आर्सेनल ने Hmm. जाके 40 मिलियन प्लस 1 पाउंड, ओके। हाँ हाँ, हाँ, I know. प्लस रिलीज वन क्लॉज था। नहीं था, रिलीज हाँ क्लॉज नहीं था, रिलीज क्लॉज हाँ, नहीं था। 40 मिलियन बट बिड ऐसा किया था, कुछ रिजेक्ट किया तो नेक्स्ट डॉलर बिड 40 मिलियन 1 पाउंड का, ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली, हाँ। सो वही एग्जैक्टली, सो यूनाइटेड का हालत इससे भी बदतर है। अगर 40 मिलियन होगा ना तो ये लोग जाके 35 मिलियन कोट करेंगे। ऐसे बेवकूफ हो गए ये लोग। तो बिकॉज उन लोग को लगता है कि हम लोग के पास निगोशिएटिंग पावर है बिकॉज वी आर यूनाइटेड। नहीं है भाई, समझाओ। चेक हमसे भाई ट्विटर, आगे आई कुछ बोलो। टैग्ड यू इन अ मीम, शो हियर। भाई नहीं टैग हुआ भाई। हाँ, तूने किसको फॉलो किया? तू मुझे फॉलो कर रहा है ना भाई। भाई तेरा आईडी तो मैं तुझे फॉलो हाँ, करता हूँ, मैं एमशे। तूने पता नहीं किसको फॉलो किया है, बट मुझे तो कोई तरह टैग नहीं आ रहा By the way, guys, I just want to make an announcement. MJ and others probably know है। that यस यस यस, प्लीज प्लीज अग्रीम भाई, गुड न्यूज दे दो। I've started my own YouTube channel. I think possibly, I think Divya can possibly share the link. शेयर द लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक Um, डाल देता हूँ मैं। yes, yes. So anyone wants to follow the Barcelona updates, you can subscribe to my channel, and also we can have a good discussion over there. और हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे Yes, ला लीगा गेम्स की, स्पेशली उनके चैनल पे, ठीक है? तो yes. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल एंड इट विल बी फन देयर एज वेल। तो मजा आएगा। उनके चैनल का नाम है ब्लॉगराना बॉम्बे। तो आई शेयर द लिंक, चैनल का लिंक शेयर कर देता हूँ, रुको, देन डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, रुको। हाँ तो गाइस, तो क्या लगता है ओबामेंग टू चेल्सी? अग्रिम भाई, ओबामेंग विल लीव बार्सिलोना, 25-30 मिलियन कुछ है। हम्म। Xavi apparently wants them एग्जैक्टली, to stay, ना? Hmm. But देखते डर। हैं if क्या बोल रहा है नहीं, आई प्रशांत? थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ओबामेयांग का शायद से, बिकॉज लेवेंडोव्स्की इज नाउ देयर एंड Yeah. दे हैव अ बिट ऑफ हिस्ट्री अमंग देमसेल्फ राइट इन द बुंडेसलीगा। Hmm. तो उस हिसाब से आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट ही वांट्स टू लीव बारसा नाउ। Hmm. तो वो एक है, एंड अपेरेंटली मतलब कोई तो बोल रहा था दैट ही इज नॉट enjoying his time. I don't know why. इतने सारे गोल तो Hmm. मतलब स्कोर किए हैं भाई ने। So हम्म। I don't know हम्म। why he is not happy, but वही, अगर उसको लंदन आने ओ का चांस मिलेगा। हो, सॉरी, लेट मी क्या लेट हुआ मी बोल। शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू समथिंग। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यस, माय आईडी, ट्विटर आईडी इज MUCD भाई, बट तूने पता नहीं किसको फॉलो किया है। मैं डी तब तक ट्विटर शेयर ने कर देता डी हूँ, लिंक डाला। कुछ बता रहा है। Yes. समथिंग आई वांट टू शो, द ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। डंकन कासल व्हिच इज प्रीटी रिलायबल व्हेन इट कम्स टू स्पेशली Jorge Mendes client. All right. अरे भाई आजा, हाँ Hmm. ये देखो। ओ Paris Saint-Germain working on a deal to sign Bernardo Silva from Manchester City. Portugal हाँ, international राइट, open to move. यस, बिकॉज अभी मजा आएगा ना बिडू। दिस बिल्कुल. इज बिकॉज यस मोनाको, समित पात्रा, यस यस, यस समित पात्रा जी, बोलिए बोलिए। मोनाको, मोनाको। अर्नब भाई, अर्नब जी, मैं कहना चाहूंगा, अर्नब जी। हाँ, हाँ। सो Monaco, the connection from Monaco, right? Uh, Yes. यस यस यस, Bernardo मोनो Silva came कनेक्शन। from Monaco, and that's where Luis Campos लुकास was. एम्पोकस, And, लुकास ऑकम्पास, हाँ हाँ। and now he's at PSG. So that is why I think they are working for Bernardo to sign on Bernardo Silva now.
मुझे मुझे पिता पिता गया गया है। क्यों भाई, किस क्यों मारा है पिता गया भाई? है तुझे? क्यों मारा भाई? किसने क्या मारा? हरकत किया आपने? आई एम पुटिंग माई एमसी में कमेंट्स में मेरा ट्विटर का ही डाल रहा हूँ, तो यू कैन फॉलो मी देयर इफ यू आर पुटिंग राइट अकाउंट को तो फॉलो कर रहा है कैन। हाँ, यस यस अमित पत्रा जी कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे आप? या आई एम डन, बोल दिया मैंने। बोल दिया, अच्छा। तो हाँ गाइस यस, इट्स गोइंग टू बी अ बिडिंग वॉर नाउ बिटवीन बार्सिलोना एंड PSG, and now Barcelona will be desperate to sell Frankie de Jong because that's the only way they can get the business done and sign Bernardo Silva if they like Bernardo Silva that much. अगर उनको Bernardo Silva actually पसंद है तो and they want that player, so that's the only way out to sell Frankie de Jong and then sign Bernardo Silva. But yes, this is breaking news right now, and मैं अपना ये बंद कर देता हूँ ये स्क्रीन शादी शेयर, वाली फोटो हटा देते हैं। शादी वाली फोटो। और अर्नब और संबित का अरे अर्नब और संबित का कौन वो? ये अपना बात चिल्ला नहीं रहा था, तो आई एम नॉट यस, फीलिंग मच ज्यादा नहीं एनीथिंग। चिल्ला रहा हाँ मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। हाँ, मुझे हूँ। तो So यार, another player who is linked to Chelsea, Anthony Gordon of Everton, 45 million bid reject किया Everton ने, but I think Chelsea will increase the bid and they are likely to get their man, 50-55 million कुछ होगा, and fantastic player, England under 21 player है, और if they are going to lose players like Ziyech and Pulisic, so they would want to sign a replacement. Gordon, he's very highly rated, बहुत ही talented है, और यू नो फैंटास्टिक प्लेयर है। एंड एमशे भाई ने एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया यहाँ पे, मुझे फ्रैंकी डियोंग दो, फ्रैंकी डियोंग दो, फ्रैंकी डियोंग दो। सही कमेंट किए भाई। हाँ, कंटिन्यू। वो भी मिलने So वाला yes, तो yes, है ही फिलहाल। right now three players are linked. Anthony Gordon, Wesley Fofana, and Pierre-Emerick Aubameyang. So I think at least दो प्लेयर तो चेल्सी ले ही लेगा। चेल्सी को फाइनेंशियल कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है। लोग पूछते हैं कि चेल्सी को फाइनेंशियल फेयर प्ले अप्लाई होता है कि नहीं, ऑफकोर्स अप्लाई होता है, बट दिट्स ऑलवेज चेक इन 3 इयर्स, हर 3 साल में चेक करते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग लैम्पार्ड्स टर्म, उन्होंने वो साल कोई भी ट्रांसफर एक्टिविटी नहीं की थी। They वन didn't buy a सीजन player वाज because उनको ट्रांसफर बैन इम्पागो। after the season that या they bought players like Pulisic, Ziyech, and उन्होंने हैवी पे किया था, बट दे ऑल्सो एंडेड अप सेलिंग लॉट ऑफ प्लेयर्स। उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स सेल भी किए थे, उनका नेट था बहुत कम था, नेट ट्रांसफर फी था बहुत कम था। यस दे डिड गेट लुकाकू, बट उन्होंने अगेन उतने प्लेयर बेचे भी थे, उनका नेट ट्रांसफर बहुत कम था, एंड दैट इज वाई दे आर एबल टू साइन सो मेनी प्लेयर्स एंड येट नॉट एबल टू ब्रेक द फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल। उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, दे आर फॉलोइंग द रूल, दे आर वेल अवेयर ऑफ दैट, उनको पहले पनिशमेंट मिला है, बैन मिला, इश्यूज हुए हैं, तो दे आर वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन, तो आई डोंट थिंक उनको कुछ प्रॉब्लम होगा। चेक ट्विटर, आई टैग्ड यू, चेक करता हूँ। यस यस, नाउ आई सॉ, लेट मी ओपन द पोस्ट। अरे ये लेट मी शेयर दिस ऑन माय स्क्रीन। प्रशांत मीम देखने से पहले ही शर्मा गया अपना कैमरा बंद करके। हाँ ना, देख तो। क्या कर रहा है प्रशांत? हाँ, कुछ नहीं। मॉम को मॉम से थोड़ा बात कर रहा था। अच्छा, क्या है? थिंक आई एम नॉट एबल टू, हाँ, होल्ड हाँ, ऑन होल्ड साउंड नहीं आ रहा ऑन। है। साउंड नहीं आ हाँ रहा रुक, है। मैं बंद करता हूँ। चलना था। क्या था कॉन्टेक्स्ट, क्या था? अरे तेरा वॉल्यूम इधर का बढ़ा ना, ट्विटर का।
अच्छा फुल है, I don't know. You getting a Vanderbeek when he gets shipped to the new Tesla factory because of manpower shortage. अरे भाई क्या है भाई पब्लिक अरे रे भाई भाई सही है ये बेचारा वैंडरबीक। कैप्शन ही तगड़ा था। वीडियो को तो चलो खैर सुन नहीं पाए, पर कैप्शन ही तगड़ा था भाई। दिस इज हिलेरियस और वैंडरबिक। और लगता है वैसे वैंडरबिक जैसा हाँ लगता है बेचारा। हाँ भाई। तेजस इज हियर, वेलकम तेजस भाई। हाँ तेजस। रानू जी हम आपसे ब्याह करेंगे। रानू रानू वैंडरबिक। अच्छा ये हाँ डायलॉग था बोल रहा है। सो द गाय एट द बैक सेज रानू मंडल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तेजस ये डायलॉग अच्छा हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं। ओके नाइस। सो क्विक राउंड अप यूनाइटेड के बारे में बात की हमने। पुलिसिच लोन डील, फ्रैंकी डियोंग इज स्टिल देयर आर स्लाइट होप। Casemiro deal looks to be unlikely. Not sure why so much hype. More likely, Jao Felix and Matthias Cunha also very unlikely to happen. Players boss linked in United से, but कोई भी realistic targets नहीं है. And of course, we spoke about Barcelona, Frankie De Jong and Bernardo Silva, and other players like Sergino Dest, Pierre-Emerick Aubameyang, and Prashant's favorite Martin Braithwaite. तो उनके बारे में बात की। एंड चेल्सी का आपको थ्री प्लेयर्स लॉर्ड लिंक, वेस्ली माइंड फोफाना, योर एंथनी लैंग्वेज, गॉर्डन एंड माइंड योर लैंग्वेज, लॉर्ड ब्रेसफेस्ट, क्या 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 माइंड योर इट्स लैंग्वेज लॉर्ड क्या? ब्रेसफेस्ट, इट्स लॉर्ड लॉर्ड ब्रेसफेस्ट नॉट ब्रेथवेट, मास्टर। सॉरी टू ऑफेंड लॉर्ड ब्रेथवेट। बट मुझे लगता है ये मार्टिन ब्रेथवेट वो मालूम है आर्सेनल का स्ट्राइक करता है निकोलस बेंटनर, उसकी तरह हो जाएगा वो। हाँ लॉर्ड, मालूम है? हाँ हर या हर एग्जैक्टली, उसमें निकोलस बेंटर लॉर्ड बेंटनर। एग्जैक्टली। कैन मीम आई रिव्यू। टैग मोर मीम? हाँ भाई बिंदास बिंदास यार। या नो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पूछो मत, क्या कर दो श्याम टैग शर्मा शो देखते है क्या तू? बिंदास। अक्षय। श्याम शर्मा से। हाँ तो कर सकते गाइस हैं तो मीम रिव्यू। मीम रिव्यू कर सकते ऑफ कोर्स मतलब मीम कभी रिव्यू एक। कर ही सकते हैं। नहीं नहीं मैं तो बोल कर रहा ही फुटबॉल हूँ मीम सकते रिव्यू हैं, एक डेफिनेटली कर अलग। सकते हैं। हाँ एक्चुअली करना चाहिए। अलग सेक्शन रख सकते हैं ऐसा। हाँ मेरे चैनल पे भी करेंगे। एमशे सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज। तो गाइस मेरे एंड से तो इतना ही था। एनी ट्रांसफर टॉक्स दैट यू वांट टू स्पीक अबाउट, कुछ है दैट आपने देखा है मैंने मिस आउट कर दिया है, ऑडियंस वुड लाइक टू ठीक नो, है सर, इसमें मुझे डिस्कशन कर वो सकते हैं। टैग किया है वो दिखाया नहीं, देखा क्या बोल रहा है? इसने मीम में टैग किया है वो दिख रहा है कि नहीं, देख जरा। हैज ही एक्चुअली टैग्ड इन समथिंग? एक मिनट। हाँ ये हैशटैग में रुक गया। ये एमशे तेरा सब्सक्राइब आ गया मेरे को। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं पहले अपना म्यूट कर देता हूँ। कैप्शन था, अगर नो बारसा स्टीलिंग मनी फ्रॉम फ्रैंकी डियोंग सिंस डे वन। मुझे चेक, हाँ चेक किया उसने। न्यूनेस मैथ्यूज न्यूनेस टू वुल्व्स, फैंटास्टिक साइनिंग। ओके, रिकॉर्ड फी है उनका 40-50 मिलियन कुछ है, बट यार बहुत ही फैंटास्टिक साइनिंग है। एंड आई थिंक वुल्व्स बहुत स्मार्ट खेल रहा है ट्रांसफर विंडो में। एमसी आपका ट्विटर आईडी मांग रहा है।
He wants to follow अरे you. I'm Amshay. I'm not on Twitter, Agrim bhai. but you can actually follow me on Instagram if you want. मेरे मेरा आइडिया है अग्रिम चक्रवर्ती के नाम से, आप फॉलो कर सकते हो उसे। जरा अरे उनको टाइप करके दे दो ना दिव्या आपके इसमें से। Yes, yes. It's all together, और right? हमसे No space, correct? हाँ जैसे भी हमसे अगर आपके कोई ये रहेंगे ना फ्रेंड बादशाह फ्रेंड उनको भी बोलना सब्सक्राइब करना है। Okay, guys. इसके अलावा और कुछ आपको ट्रांसफर न्यूज के बारे में बात करना है? Anything else that you want to speak about? Either one of you. Something that I missed out on, and you want to, speak about that topic on transfers. I think we have actually तब covered तक मैं कुछ most of the things we have covered. And I think we need to like speak about like that one that minority stake that like the हम्म, Glazer हम्म, wants to probably thought of sharing. Yeah. So the I one mean, the which I pressure mentioned is that. there. Yeah, yeah, Yeah. the Hmm. pressure is there. A lot of pressure to sell the club, but I think they will only थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे एंड अभी भी उनको हर साल तो डिविडेंड्स तो ले रहे हैं उनको प्रॉफिट से उनको लगता है कि ये हवा जो है थोड़ा टाइम के लिए Hmm. रहेगा इफ दे स्पेंड लिटिल बिट मनी तो शांत हो जाएंगे फैंस एंड मे बी थिंग्स विल काम डाउन बट आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि इट्स 6 बिलियन कुछ है वर्थ यूनाइटेड का एंड देन और अबाउट दैट नॉट ओनली हैज द ओनर टू बाय इट फॉर 6 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो स्पेंड करना है ट्रेनिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड करना है स्टेडियम में इश्यूज है Hmm. स्टेडियम या तो रीबिल्ड करना है या तो नया स्टेडियम बनाना पड़ेगा उसमें अलग खर्चा Hmm. लगेगा क्लब के ऊपर 650 मिलियन का डेट है उसको क्लियर करना है तो देर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड as much as it sounds fascinating this one will buy United, yes, so and so person will buy United, it is not realistic at this point in time. Yes, we can come together as a fan base and drive the Glazers out, protest कर सकते हैं. Once living in Manchester, we can show our Yep. the unhappiness on social media platforms and everything. Not buy merchandise, जो jerseys नहीं खरीदने का जो भी नए आए हैं. Don't hit them where it hurts them the most. उनके लिए पैसा मैटर Absolutely. करता है. So if you don't buy the merchandise देन उनको स्पॉन्सर्स नाराज हो जाएंगे टीम व्यूअर और एडिडास उनके जो मेन स्पॉन्सर्स है इफ दे आर नॉट रेडी टू दे नॉट जनरेटिंग द मनी तो इश्यूज होगा उनको दैट्स द बेस्ट एज अ फैन वी कैन डू बट आई थिंक इवन इफ दे एंड अप सेलिंग इट आई विल हैव टू इट विल टेक सम टाइम एटलीस्ट अ ईयर और टू तो चला ही जाएगा एमशे सेज ब्रो आई हैव नो फ्रेंड्स क्या झूठ बोल रहे हो भाई हम आपके फ्रेंड नहीं Yeah, है क्या yeah. हम तीनों इतने अच्छे दोस्त हैं क्या Hmm. तेजस से Malaysian says 100% for sale. तेजस इट्स नॉट फॉर सेल स्टेक बेचेंगे वो लोग हाँ क्लब को बेचेंगे बट अभी तुरंत नहीं बेचेंगे स्लोली Yeah. स्टेडीली पैसा पूरा चूस बट के एकदम माइनॉरिटी स्टेक सब बोले कुछ ना खत्म हो बट द जाएगा थिंग इज But the thing is, it's like So minority stake, ना. So it's like probably like 5 or 6% कुछ बोलेंगे ले लो इसमें से आपको जो लगता है आप उसमें आप डाल दो अपना पैसा मेरे को नहीं लगता no, like दे यार agree. अरे So दे बैक ऑफ दीज गाइस मैन यार सऊदी को नहीं ये उनका बेटर रिजेक्ट मार दिया यार सऊदी को और उससे सऊदी पहले एग्जैक्टली कतार को भी सऊदी तो करेक्ट करेक्ट न्यू कासल वांटेड जो न्यू कासल ओनर है देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू बाय यूनाइटेड जस्ट बिकॉज वो यूनाइटेड को रियलिस्टिक टारगेट नहीं था दे couldn't buy it एब्सोल्युटली they were not willing to sell तब जाके they went for Newcastle तो विकास एब्सोल्युटली yeah exactly so it is very difficult they बहुत hostile takeover हुआ sponsors को sponsors मिलके come together and say no you need to go out and बहुत आई थिंक एटलीस्ट एक साल तो लग ही जाएगा ओवरनाइट तो होने वाला नहीं है that's why it is तेजस से uh, he's sorry. well यही connected कर with people in the club. Yeah, I know. Malaysians well connected है people में, but still, I don't think overnight तो होगा ये. Minimum 1-2 साल तो लग चली जाएंगे. They And the thing is protest होंगे, सब होंगे, that is but why ठीक है. uh, that is why in the long term मतलब
may as well ये यूनाइटेड का जो भी खराब परफॉर्मेंस हो रहा है in the long term if it is better for the club it may as well be worth it. So you know as we say love United take the blazer. ये एमसी का कमेंट क्या था, Point, ब्रो point. द Good डिप point, अगेंस्ट Prashant. गॉड? ये क्या है ब्रो, द Bro, that trip ड्रिप against अगेंस्ट? God. व्हाट ड्रिप? बट एनीवे Yes, लाइक और एक बात मुझे one more thing that it reminded me, just again एमसी का फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो, उसका इंस्टाग्राम पोस्ट के बहुत कंट्रोवर्सीज हुआ. He said that once the window is over, on second he will give an interview which will open out a lot of secrets, for a lot of things that been told lies in the media about, and he'll expose the media. But Gary Neville ने कहा if you have to expose people, whoever you are exposing, why are you waiting till 2nd of September? It's अभी या वो व्हाई he's डोंट यू are से, he हाँ going to एग्जैक्टली, expose media, दैट्स अ the गुड पॉइंट. club? We don't even know के रोनाल्डो 2nd of September को यूनाइटेड प्लेयर होगा कि नहीं. I feel 90% of the chance, 90% chance है he will not be a United player. And if he's not a United player, maybe then he can do that. But if he's still at the club, what is he going to speak about? So a So lot of things have either been said. so yeah the thing is कि he it's most likely because तब तक ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाएगी. So either whether he is a United player or not he can then expose people. Hmm, जो भी लोग हैं सबको hmm, एक्सपोज करके छोड़ेगा जैसे राल्फ रैगनिक ने किया था वैसे ही ये भी करेगा एंड दैट hmm, विल hmm. ऑब्वियसली एक्सपोज पीपल. सो वही होगा. ये थिंग पार्शियल नहीं होगा पूरा ही होगा जब होगा. तब एज ऑफ नाउ दे वांट टू डाउनप्ले We एनी want सच to थिंग. downplay any. Correct, correct, exactly. लेट्स सी. ओके. I checked his Insta ID. Man's been hot consistently for 8 years. वेट करते हैं. So, guys, I ओके. think we are over our time. Crossed 5 minutes ज़्यादा हो गए. So before I wind up, anything you guys want to add up? Prashant Agrin, तेजस, तेजस wants to add probably one news. He's saying येलो न्यूज करके कुछ है. What is the waiting, news, waiting, please, तेजस? waiting, waiting. What is the news? बताइए What is the बताइए. news? बताओ बताओ टेल टेल. By the way, there is a source telefootball Spanish है बोल रहा है Manchester United have received encouragement in their pursuit of Casemiro. Real Madrid have made it clear they will not stand in the way if the Brazilian wants to go. Hmm. Why will the Brazilian want to go? Exactly, exactly. The Brazilian wants a better contract. और हाँ. कुछ नहीं है, बस यही हाँ. है. Okay. Good to know. What is? न्यूज आ गया. Yeah. ENOS billionaire owner Sir Jim Ratcliffe. I want to buy Manchester United in yours. Billionaire wants to talk with Glazer or minority stake with a long-term view of taking full control. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. That, Interesting. Sir that's Jim interesting. Ratcliffe is trying to buy United since a very long time. He's a So Manchester United fan है वो खुद. basically हाँ और ये Jim Ratcliffe is the one whom this guy is also approaching अपना Michael Knighton. He also approached Michael. Jim Ratcliffe. माइकल So But नाइटन he's not बकवास as, है. माइकल नाइटन but कुछ नहीं करने I वाला. don't think he's like माइकल as नाइटन wealthy पहले as भी this कर guy, चुका no? है. but उसने भी नाम He इतना failed लिया था. miserably. Jim Ratcliffe. माइकल नाइटन Not कुछ नहीं as करने वाला. wealthy. नहीं बट उसने ऐसा- नाम लिया था इसका. हाँ उसने वो इसका नाम But लिया he's कुछ था. been नहीं a करने previous वाला है. तो owner, हाँ. no? देखता है. But he's been a अच्छा previous owner of कैसेमिरो that इन club, no? हाँ एग्जैक्टली. कैसेमिरो लर्निंग इंग्लिश टू रिजेक्ट मैन यूनाइटेड. अरे ये बहुत पुराना हो गया ये जोक. एमसी ये भाई लोग बहुत बहुत पुराना हो गया. तो ये सही है ना, मतलब इंग्लिश सीख के मतलब लगा, no, I don't want to sign for Man United. हम्म, एग्जैक्ट. फिर वो जोसे वाला डायलॉग मारेंगे, you know how many titles I got? 3. And other managers 0. जीरो जीरो. रिस्पेक्ट मैन, रिस्पेक्ट, Respect, रिस्पेक्ट, man, रिस्पेक्ट. respect. बाय Respect, द वे man. मैंने ये जोसे मourinho का जस्ट आर्टिकल पढ़ा है डेली मेल पे. ये अभी डेली अली इज नॉट प्लेइंग वेल ना. तो Yes. लाइक ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है कि लोग उसको बोल रहे हैं ही शुड लिसन टू mourinho बिकॉज वो Hmm. डॉक्यूमेंट्री है ना जो स्पर्स वाला ऑल और नथिंग.
उसमें मोरिनो ने उसको बोला था दैट यू आर सपोज टू पुट इन The effort. मोर एफर्ट, हाँ, यू आर सपोज टू डिमांड मोर ऑफ योर सेल्फ, नॉट हिम। और Yep. वहां से लेके यहाँ तक लाइक एकदम मतलब मोरिनो वाज राइट, उसने उसको बोला Yep. था यू आर वेरी लेजी। Hmm. Yeah, तो but हम्म, द Mourinho लाइन has इज always वेरी, been spot on, Like I don't हाँ understand, like some United fans, they used to hate Mourinho so much. Like, ठीक है, I understand his toxicity also, no? Like, ठीक है, he never used to like some players that wanted to play for him. But understand, he has a CV of Inter and Porto and plus Real. You have to give that हाँ, man some एंड respect. चेल्सी टू, Huh, Chelsea to an extent also. But I'm saying like एग्जैक्टली, he has built himself that way, no? But I don't हाँ understand एग्जैक्टली, तो ही why हैज did बीन, not take. he has been And proven Aramse, correct. hmm, Even for I'm saying United, there were fans who were criticizing him, but now they all realize कि हाँ भाई ये भी बंदा सच्ची बोल रहा था। When he was stating कि हाँ भाई, like when I finished second with Manchester United, that is one of my greatest achievements. सभी लोगों ने उसको हल्के में ले लिया, but now here we are. It is like it makes a absolutely. lot of sense because everything is exposed. Okay, so what's the statement? A spokesman for the Ineos billionaire confirmed that Ratcliffe would welcome the chance to talk to the club's owners if the club is for sale. Jim is definitely a potential buyer. Chalo bhai, some good news. Let's see where this That's a goes. good one. Hey, Delhi Ali is going to Besiktas for the going first to time. Besiktas. Besiktas fans are like, don't come to Besiktas. Jose was always right about things in United and was a serial winner. We sacked him for a knob like Ole. हाँ, But यार, You know what the happened? But मुझे मुझे I just want, हाँ, बोल please बोल go on. बोल अग्रिम में क्या बोल रहे थे? No, no, आप पहले बोल दो, फिर मैं उसके बाद बोलता हूँ. मैं बोल रहा हूँ Jose Mourinho finished second with 81 points, the most number of points Yep. earned by a manager after Sir Alex Ferguson, post Sir Alex yeah, Ferguson. ठीक है? And after you finish second, close to Man City by 17, 18 points, what does the club do? Shows more ambition, backs him in the transfer Mm, window, signs players. absolutely. The players that we signed was embarrassment. So embarrassment of a window it was. Diego Dallo, Lee Grant, and Fred. What a pathetic window that was. He wanted a centre back. He was not given a centre back. And that's what, Mm, and that's why it became more and more toxic. I thought at the end they made the correct decision. He had to go, but a lot of it was on the board as well. It was not just Mourinho. He did, and what he said about United that he got second place, that's his biggest achievement, is absolutely correct. Players like Martial, Pogba were not up to it. He wanted the club to sell them for a long-term future by good players who wanted to play for the club. And here we are. Pogba is leaving on free. absolutely. Martial's future. We don't know what's Absolutely. going to happen. So वो जो बोल रहा था लॉन्ग टर्म में सही बोला था. Also, crowdless stadiums helped the team when it was under Ole. Once the fan came back, our team wasn't the same. Also, Liverpool were without Van Dijk at the same. I know Tejas Good by point. what you're speaking is absolutely truth. जो बोल रहे हो एकदम सही है वो. But कुछ fans को we came second. मैगवायर का बेस्ट सीजन था. शॉ का बेस्ट सीजन था. There were no fans on the ground. Liverpool की half. And Mm, we finished second with 75, 76 points. That is absolutely fast. That second place is absolutely. I don't. It's a मतलब वो एक धोखा था. Which हम लोग ड्रीम्स में चले गए. यूरोपियन फाइनल में आ गए. Although we bottled it, but फाइनल में आ गए. और सेकंड प्लेस आ mm, गए. And now we are progressing, but we weren't progressing. And the worst part is we didn't buy a midfielder then. After coming second, and we are not buying again a midfielder. mm. Check Twitter से Ramsey. तो फटाफट ट्विटर देख लेता हूँ मैं. I just wanted to also point out one thing, like Alex Ferguson had stated already, like Mourinho was the perfect successor for him to succeed at Hmm. United, which everyone knows. No, yeah. should have given him at least 1.5 season more. He could have turned around things Correct. at United. The thing was So that what changed the last season? Some coach, same and same players. I know. but to be Mediocrity. honest, last season Ronaldo आ गया ना, तो that kind of ruined the it for him because tactically Ronaldo was not up to it. रोनाल्डो का भी, आई एम नॉट डिफेंडिंग ओले, बट रोनाल्डो आ गया मतलब काफी सारी चीजें चेंज हो गई थी, तो Hmm. दैट इज वन No, थिंग आई वुड लाइक टू से। वो तो सर एलेक्स फर्गसन के कहने से आया ना, बिकॉज ही वाज विलिंग टू गो टू मैन सिटी.
एमसी से एमसी ने टैग किया है. Man United chief negotiator been escorted out of Santiago Bernabeu after trying to sign Casemiro. There's another meme he's tagged me on. Let me quickly go through that. Man United versus Liverpool next week. Hmm. Relatable. A lot, relatable, a lot. Hmm. So, guys, I think we've come to the end of our show. Thank you very much, guys, for joining in. Both of you, Prashant and Nagrim Bhai. It was a Absolutely. wonderful show. Enjoyed so much to talk about, debate hua, you know, opinions clash हुए. But at the end of the day, we all agree to a lot of points and 15 days to go. बहुत ही मजा आएगा ट्रांसफर में एंड आई एम प्लानिंग टू डू क्या बोलते हैं लास्ट डे को यू नो विंडो एंड कुछ लास्ट 1 hour 2 hours विंडो के आई एम गोइंग टू डू अ लाइव शो ऑफ कोर्स प्रशांत नगरम विल बी देयर bro the vibes changed last year was bad. This is worst, absolutely. Ronaldo scored 18 goals and did his job in underperforming team, and Ole was fine with Ronaldo. So if those World Cup players could finish second and third, then they shouldn't have problem with anything. अरे रोनाल्डो को scapegoat बना रहा है और कुछ नहीं. I just want to Hmm. finish off this with this. They need a scapegoat to target on. Pogba चला गया, Lingard चला गया, अभी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो. So Yes. bye bye Naldo. Great stream, Nardo. Thank you, guys. Thank you, Akshay. Guys, do make sure to subscribe to our channel. If you like the video, smash like on the video. And अगर आपने live नहीं देखा stream बाद में देखते हो, so do let us know your opinion in the comment section. I will definitely reply to your comments. Thank you, guys. Thank you, Mshay. Thank you, Tejas, for being in the comment section. Thank you, Agreement Prashant. See you on Saturday Absolutely. for the preview. मजा आने वाला है. And Yes. Messi goat CR7 scapegoat. Bye guys. Bye bye. Bye. Well, bye. Good night, guys. Bye. Bye. Good night. Good night.